Good evening, everybody. Welcome back to Swami Vijay's EMRS, KVS, NVS live class. And in this class, we are going to discuss EMRS Part 6 General Hindi, as well as for KVS and NVS who are preparing with the language Hindi part as their Part 5 language competency test. So, this video is also useful for them also. ओके तो कल हमने हिंदी में एक क्लास कंडक्ट किया था, आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन थे और हम सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख लिया और बात करना या पढ़ना सीख लिया है. दिस इज द सेकेंड क्लास इन कंटिन्यूएशन टू द जनरल हिंदी पार्ट फॉर EMRS टाइप 1 एग्जामिनेशन. तो इस क्लास में हम हिंदी को आज कंप्लीट करेंगे और आने वाला दिन में बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हिंदी. लेकिन आवर मेन एम क्या है, वी हैव टू स्कोर द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. पार्ट 6 में हिंदी है और इंग्लिश दोनों है. तो इंग्लिश में 10 मार्क्स के लिए और हिंदी में 10 मार्क्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए. सो इन दिस पार्ट ऑफ पार्ट 5 ए, ऑप्शन ए इज हिंदी, ऑप्शन बी इज ऑल्सो English. If you can score 10 out of 10 marks from Hindi English part, you need not to go for Hindi part. Or if you can score 10 out of 10 marks in Hindi part, then you need not to think about English part. But when there is a problem of getting 8 marks out of 20 marks from this object, from these two parts, then you have to be careful. So as you are all postgraduates in English and graduates in English, I don't find that much difficulty for you to find out 8 marks to gain or to score 8 marks from this part. कल जैसे हमने किया था, एक पैराग्राफ लेके उसको हमने प्रैक्टिस किया था, आज भी वैसे ही करेंगे. तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको इंग्लिश में 8 मार्क्स से नहीं आ रहे, मिनिमम 8 मार्क्स अगर आप लोग ला नहीं पा रहा है हिंदी इंग्लिश पार्ट में, तब आपको हिंदी पार्ट में आना है. और हिंदी पार्ट में दोज आर वेल वर्स इन हिंदी, जिसको हिंदी अच्छा से आता है वो लोग अच्छा से आंसर कीजिए. लेकिन जो लोग जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना है, उन लोगों को द ग्रेटेस्ट सपोर्ट, द ग्रेटेस्ट बून और द ग्रेटेस्ट एसेट इज दिस गद्यांश, दैट मीन्स अनसीन पैसेज. Unseen passage you have to read, you need to learn, you must learn unseen passage reading and identifying at least 2 to 3 marks from this part. And opposite and synonyms, if you can identify, that is well and good. So without any delay, let us start today's class. And not like yesterday's class, lengthy introduction is there, because yesterday I explained how to do, what is the right strategy to score 8 marks. So if those who were absent yesterday or those who could not attend classes yesterday, I'll repeat one more minute. If you can score 8 marks out of 10 marks from general English part, you need not to touch general Hindi. If you are forced to come to general Hindi part to find answers, then restrict yourselves to unseen passage and read those unseen passage again and again and try to find answers to those questions. And whenever you are very sure about those answers, select those answers. And the next important information is, when you receive the question paper in the examination hall, first come to the part 6 of EMRS question paper and first find out answers to this general English and general Hindi part. And once you feel that, once you believe that you can score, or you scored 8 marks, then only go to the next part of the question paper. Now what are the other parts of the question paper? Part 1, general awareness, 10 marks. Part 2, reasoning ability, 15 marks. Part 3, knowledge of ICT, 15 marks. Teaching aptitude, 30 marks. Experiential learning and case based pedagogy, 20 marks. And then comes this one, domain knowledge under NEP and NCF 2023 for 10 marks. Because as we all started preparing for NVS, now we are all getting confused with the NVS syllabus and as well as the EMRS syllabus. Let's keep NVS and KVS examination aside for a while and focus on tier 1 examination. The reason is, if you score good marks in tier 1 examination of EMRS, it will boost your morale and self-confidence to face KVS and NVS examination. And one more maybe important information is, maximum they don't apply for EMRS. Even they apply for EMRS, they don't prepare seriously for EMRS. The reasons are, first one, it is a residential school. Second one, it is a tribal students school.
And third reason, those schools are located in the remotest part of in the remotest places. So majority of people, listen to me carefully, whoever are in this class, listen to me very carefully. Whoever had applied for EMRS tier 1, now they have started focusing, or they have already focused on KVS and NVS, and they have left that examination already. Do you all understand what I said? Like you, 90% of EMRS aspirants, now they shifted focus from EMRS to towards KVS and NVS, because I spoke to so many people. So now whenever I ask them, how is your preparation going on for EMRS, सर EMRS को तो छोड़ो सर, अभी KVS को ही हम फोकस करेंगे, NVS को भी फोकस नहीं करेंगे, हमको सिर्फ KVS चाहिए. क्यों चाहिए KVS? वाई डू यू वांट टू एंटर इनटू KVS ओनली? सर सिंपल है, रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, डे स्कूल है, सुबह जाओ काम करो, आराम से वापस आ जाओ, उस बाद में तो कोई कुछ परेशान नहीं है, यू आर फ्री आफ्टर स्कूल आवर्स. लेकिन EMRS and NVS 24 hours into 7 duty. So if you understood what I said, 90% of people who applied for EMRS already diverted their attention and focus towards KVS and NVS. They are not going to write the examination seriously. But we are not going to commit the same mistake here. We will focus and we will first appear in the tier 1 examination, and if you score even reasonably good marks, you are going to clear the tier 1 examination of EMRS. Once you clear the tier 1 examination of EMRS, then the competition is very, very less in the tier 2. So please understand the psychological aspect of these examinations. 90% they already moved away from EMRS preparation to KVS and NVS preparation. But we are those 10% who are continuously preparing for EMRS. So we have maximum chances, or we improved our chances for clearing tier 1 examination of EMRS. Okay, if you have understood, please send a thumbs up to me in the reactions. Okay, KVS is good, NVS is also good, but EMRS is also equally good. Okay, government job is government job, central job, government job is central government job. If you always look at comfort, then teaching job itself is not useful, because teaching job has less respect in the society, teaching job has less privileges, teachers have less privileges in the society. So 90% competition is already over. You need to focus seriously on tier 1 examination of EMRS, and then we'll focus on tier 1 examination of KVS and NVS also. So this is the strategy, and today is the last class for Hindi, and tomorrow we'll go for complete revision of all the areas of EMRS tier 1, and then we'll decide what is the strategy for the coming days, how to prepare for tier 1 EMRS examination, and along with KVS and NVS preparation also. Okay, so now let us begin today's class, because those who were absent yesterday or those who could not attend classes yesterday, this was actually discussed and I have added, because after speaking to so many people, they already said, sir, we don't want EMRS now, we want now KVS, not even NVS also. So that is the psychology, because if you get a better option, you will forget about the little difficult options. Human mentality, these are the traits of human nature. Right, so Hindi will practice, and let us end this class by 8 a.m. or on exactly at 8 a.m. Okay, so now on screen you can see the reading comprehension. So yesterday whoever tried, I congratulate them because they read it very well. Now let us see who others can read this passage. Arunav Chattopadhyay, can you unmute and your mic and can you read this paragraph? Yeah, Arunav, your voice is not clear. sir. कोशिश करता हूँ. हाँ करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों को हार नहीं होता है ना. आपने नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर, उधर से स्टार्ट करो प्लीज. समस्याओं का
Your audio is not reaching. Am I audible to everybody? Right. I don't know. Maybe because of low bandwidth from your side, you are not clearly audible to us. So we'll see next time if you can read. हल ठीक से आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. seen by me. I don't know. आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. ब्रेक हो रहा है. Sir, text not visible to me. टेक्स्ट मे बी वो स्लो मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, स्लो इंटरनेट कनेक्शन है ना, इसलिए इसका वजह से आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आपको. ठीक है, कोई बात नहीं. लेट अस ट्राई विथ अदर्स. चंद्रशेखर. Sir, हाँ sir. चंद्रशेखर, Even I cannot see the text. you re-log in. I don't know. You have to once. Even I cannot see the re-log in. text. I don't know. सर अब आ रहा है. अब आ रहे हैं. हाँ अब पढ़ो. टेस्ट आ गया. तो ठीक है, पढ़ो. अपनी समस्याओं का हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. अतःपूर्व सामाजिक सुधार के संपूर्ण समस्या या रूप लेती है. कहीं वो लोग जो सुधार चाहते हैं पहले उन्हें तैयार करें. ठीक है, गुड गुड गुड. हाँ, right. Then let me ask Chandrasekhar, can you hear me? Navat వినిపిస్తుందా చంద్రశేఖర్? yes sir, good evening sir. గుడ్ ఈవినింగ్ చంద్రశేఖర్. చదువు ఒకసారి హిందీ. sir first time sir. చదువు. sir नीचे दिए गाई sir, I'm not able to read. You have to read because you are the top scorer or one of the top scorers in EMRS, and you should not miss tier 1 examination because of just Hindi part. पढ़ो, ट्राई करो, कोशिश करो. I am not good at Hindi sir language. చూడు, ఇదొక్కటి కానీ కొంచెం నువ్వు సరి చేసుకున్నావంటే 2-3 మార్కులు కానీ ఇందులో తెచ్చుకున్నారంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా టియర్ 1 మీద క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అక్కడ ఛాన్స్ ఇస్తారా సార్? తర్వాత నేను కొంచెం చూసుకొని. ఓకే, రైట్. నేను మళ్ళీ చదువుతాను సార్. ఓకే ఓకే. మానస, ऐसा प्लीज रीड. नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. अपनी समस्याओं को जलकर लेने वाला एक कलंकारी और प्रबल लोकम स्थापित करने में समय लगाता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीचाना बायाना दा, is it ba or da? बीचाना, how is it sir? और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. उत्पूर्ण सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है. how is it pronounced? Sir, how is it pronounced? Okay, you pronounce whatever the way you want to pronounce, you pronounce. वो लोग जो सुधार चाहते हैं पहले उनको
sorry, तैयार करे. करे Oh, ठीक good okay, good let's good say. good Sir, today I read this passage from our previous year paper, and I was able to like attend two question correctly, two or three question. Like Vibari Shabda, something I was the way sir yesterday told, no. So I was able to connect with that from that EMRS. So I got a confidence today. I read two or three keep paragraphs. practicing Manasa and others. If you keep practicing every day for 10 minutes to half an hour, let us take half an hour. If you keep practicing, then automatically you will gain confidence. Okay, I also learned like that only. Okay, right. Now, Prince Kumar, unmute करके एक बार पढ़ो ठीक से हिंदी में. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. अतः पूर्ण सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है. कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो. गद्यांश में किसकी स्थापना का उल्लेख है? और एक दो लोग पढ़ेंगे, बाद में हम आंसरिंग करेंगे. ठीक है. और कौन है इधर? దేవ్ కుమార్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చదవండి ఒకసారి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, చదవండి. गद्यांश. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. अपनी समस्याओं के हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगाता है, काफी लंबा समय लगाता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. अंतःपूर्ण सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है. कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उनको तैयार करें. గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. బాగా చదివారే మీరు. అలవాటు అయిపోయింది సార్. మన క్లాస్ విన్నాం కదా సార్. ఓకే ఓకే, రైట్, ఫైన్. one more person will read and then we'll go for answering. Ranjita Madhavan. Ranjita ಅವರೇ. Good evening, sir. Good evening, ma. ಓದಿ ಒಂದ್ಸರಿ. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, sir. गद्यांश. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. अतः पूर्ण सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप ली है. कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो. ठीक है, गुड गुड. Thank you, sir. अच्छा पढ़ा आपने. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರಮ್ಮ. Thank you, sir. Welcome. Right. Jyoti ma'am, are you there in the class? Jyoti? Yes, sir. Okay. Yeah. Oh, right. We started actually yesterday. हमने स्टार्ट किया था कल से हिंदी, जो पार्ट 6 का जनरल स्टडीज में है ना, जनरल हिंदी पार्ट है ना, वो हम कल Yes, sir. किया था. आप नहीं थे ना क्लास में कल? सर मेरे यहाँ शादी थी, तो अभी कल के बाद मैं टोटली फ्री हो जाऊंगी सर. बस ठीक ठीक. आज तो मैंने गेस्ट को अवॉइड किया है, चुपके से एक रूम में आके बैठी हूँ सर. करना पड़ता है ना, अगर बड़ा Yes, sir. फैमिली है तो सब कुछ करना पड़ता है. बहुत बड़ी फैमिली है सर. कल सबको बारात में जाना था, इसलिए अवॉइड ही नहीं कर पाई मैं. ठीक है, ठीक. मैं रीड करूँ सर? हाँ, एक बार रीड कीजिए मैडम आप. ओके सर. गद्यांश. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. अतः पूर्ण सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है.
कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं, पहले उन्हें तैयार करो। ठीक है, ठीक है. Now we'll start answering, but for answering I'll shift to my tab so that I can write on screen and we can do this answering properly. So I'll share screen from my side. Just a minute. Where am I? Okay. So I'll share screen from here. Start broadcast. Okay. Where is that? Files. Okay, here is a file. This one is done. हाँ, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक से क्वेश्चन पेपर. तो एक बार इसको ठीक से देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर करने हैं. हमको एक ही है मकसद, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है. इससे मैक्सिमम 2 या 3 आंसर, सही आंसर हमको ढूंढ लेना है. अगर 2-3 मार्क्स इसमें आ गया और इंग्लिश में आपको 6-7 मार्क्स आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए. we don't need not to score 20 out of 20 from this part. We need to score only qualifying marks. So don't waste too much time also in this part. Okay, so ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या अनसीन पैसेज है. तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. सो राइट आंसर को आपको पकड़ना है. पकड़ना मतलब वही है, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर. ओके, सो ऑल ऑफ यू नाउ रीड इट साइलेंटली. In examination, those who are from the southern part of India, those who are not, Hindi is not their mother tongue, you have to read it once, slightly louder in your examination hall also, and then internalize once and then read it silently. Okay, so that you can understand. In first reading, whatever you can't understand, in the second reading you will understand. Whatever you can't understand in the first and second reading, in the third reading you will understand. So minimum 3 times you have to read. Okay, now let us go to the first question. हाँ प्रिंस, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. प्रिंस अनम्यूट कर लो. गद्यांश में किसकी स्थापना का उल्लेख है? विकल्प मतलब क्या? 1 ऑप्शन. हाँ, विकल्प मतलब ऑप्शन. ओके. हाँ, पढ़ो. ऑप्शन 1 कल्याणकारी और सुदृढ़ लोकमत. ऑप्शन 2 कल्याणकारी और प्रबल लोकमत. ऑप्शन 3 कल्याणकारी और लोकतांत्रिक मत. ऑप्शन 4 लोकतांत्रिक और प्रबल मत. ओके, इसको एक बार समझाओ सबको. ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इट इज एक्चुअली आस्किंग और व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. सर पहले पैराग्राफ को मतलब कि देखना पड़ेगा, मतलब समझाना पड़ेगा. समझो. पूरा स्क्रीन को पूरा नहीं दिख रहा है. हाँ, अभी व्हाट्सएप पे खोलते हैं. व्हाट्सएप पे हम पीडीएफ देख ले रहे हैं. हाँ, पीडीएफ व्हाट्सएप खोल देख लो. तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए. अपनी समस्याओं को हल करने लेने वाला एक कार्यपारिक और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी. पूर्व सामाजिक सुधार. सर देख, मतलब इसको समझाएं या मतलब कि पढ़ें? नहीं, समझाओ, क्योंकि 4-5 बार पढ़ना है ना, सो अब समझाएगा. ठीक है सर. इसमें बोल रहा है कि अपने समस्याओं, मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए एक कल्याणकारी का मतलब होता है वेलफेयर, और प्रबल लोकमत. प्रबल मीन्स इंटेंस. प्रबल लोकमत का मतलब हुआ मत मतलब वोट होता है, लोक मतलब पीपल, मतलब कि इससे आप दोनों का इंग्लिश ही हो गया. तो स्थापित करने में समय लगता है, मतलब समस्याओं को हल करने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत को एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. One second, Prince. To explain the same information in English, to
create one well developed, organized, proper democracy takes a lot of time, and to create such kind of a democracy we need right politics and right politicians, and that takes lots and lots of time. That is actually the moral of the passage. Prince, continue करो. और इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट लगेगा, मतलब कि टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस। अतः पूर्ण सामाजिक सुधार मतलब कि सोशल रिफॉर्म अगर हम लोग चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले उन लोग को हमको आह्वान करना पड़ेगा, उन लोग को हमको बुलाना पड़ेगा जो रिफॉर्म चाहते हैं, मतलब जो रिफॉर्मर जो है उनको हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, उनको हमको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ये सब चीज़ को करने के लिए। बस इतना ही बोल रहा है इसमें। इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? कल्याणकारी है ना, ये क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है? कल्याणकारी, कल्याण को इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर। ओके, रिफॉर्मर्स ले सकते हैं ना हम लोग? क्या सर? वेलफेयर पीपल को रिफॉर्मर्स कर सकते हैं, वेलफेयर ही लिखना है उसको। हाँ, कल्याणकारी मतलब जो वेलफेयर वाला स्कीम हो वो हो गया। So, suppose everybody could understand bit of the information from this passage. Right, fine. अब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला गद्यांश में किसकी स्थापना का उल्लेख है, तो किस चीज के बारे में बोला जा रहा है इसमें? तो फर्स्ट में बता रहा है कि कल्याणकारी और सुदृढ़ लोकमत, कल्याणकारी और प्रबल लोकमत, तो कल्याणकारी और लोकतांत्रिक मत, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ से ही हम लोग देख सकते हैं कल्याणकारी और प्रबल लोकमत, जो आप बोल रहे थे ना सर एक दिन कि एकदम डायरेक्ट मिल रहा है, तो वही फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन होगा। So, for example, if you get these kind of questions, how to identify? You need to lick. Okay, Asta, fine. You relog in. What you have to do, the first technique is when you read the paragraph and when you read the questions, identify the keywords which are part of the question as well as the passage. If these words matches together, then that is the right answer. So here Kalyankari, it is also here it is matched, और प्रबल लोकमत here also it matched, so this is the right answer option. सही है ना प्रिंस? हाँ, इसी चीज का मतलब बोल ही रहा है, मतलब थीम यही है पैसेज का, वो पैसेज का थीम के बारे में ये क्वेश्चन था। ठीक है। गद्यांश के अनुसार सामाजिक सुधार की मूल समस्या है, तो सामाजिक सुधार का मूल समस्या क्या है, मतलब क्या मेन प्रॉब्लम है ये सोशल रिफॉर्म का? पैसेज के अनुसार सोशल रिफॉर्म का मेन प्रॉब्लम क्या है? तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया हुआ था ना, कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं, मतलब इसमें बता रहा है कि कहाँ है वो लोग, मतलब इसमें आह्वान करना है, इन्वोक कर रहा है वो लोग को जो रिफॉर्म चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उन लोगों की तलाश जो सुधारक है, ऑप्शन 2 है उन लोगों की पहचान जो असामाजिक है। असामाजिक मतलब असामाजिक। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन सर। एक मिनट फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको सब। एवरीबडी, डिड यू ऑल स्कोर 1 मार्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन? एवरीबडी whoever are here, Mahesh Kumar sir, Dev Kumar sir, Chandrasekhar, Snehalata, whoever are in this class, did you all get 1 mark? Good, fine. Right, so everybody got 1 mark here. So the simple technique is identify the words from the question, identify the words in the passage and find out if it matches, then that is the right answer. हमको तुक्का में जैसे भी है हमको तो मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ो प्रिंस। गद्यांश के अनुसार सामाजिक सुधार की मूल समस्या है, मतलब इसमें बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो सोशल रिफॉर्म है उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द पैसेज फॉर सोशल रिफॉर्म। तो फर्स्ट में है उन लोगों की तलाश जो सुधार, मतलब ये ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड दोज हु आर सोशल रिफॉर्मर एंड द सेम थिंग द पैसेज इज सेइंग। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं, मतलब सुधारक का ही बात किया जा रहा है ना।
तो यहाँ पे भी बस उन लोगों की तलाश करना, मतलब कि फाइंड आउट करना जो सुधारक है। तो सेकंड का फर्स्ट होगा आंसर। प्रिंस मुझे बोलने दो, मैंने ये क्वेश्चन पेपर हाँ। एक्चुअली डाउनलोड किया था और उस क्वेश्चन पेपर में क्या आता है ना, वो रेस्पॉन्स शीट भी थी उसमें। सो रेस्पॉन्स शीट में वो आंसर दिया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 दिया था। अच्छा 3 दे रहा है। 3 दिया, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट में देते हैं ना यूर आंसर एंड करेक्ट आंसर करके देते हैं ना रेस्पॉन्स शीट में। हाँ तो उसमें दिया था आंसर Correct. ऑप्शन 3। एक बार समझेंगे, सब लोग समझेंगे। सुधार हेतु क्वेश्चन लोगों पढ़ो, को तैयार एक करना। काम करो प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो। ज्योति मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ के एक्सप्लेन सर सर इसमें यही थर्ड ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें ये समस्या ये है कि लोगों को तैयार करना है, न केवल सुधार के लिए हमें खोजना नहीं है लोगों को। इसने कहा कि कहाँ है वो थोड़ा सा लोग, मिस कर- पहले उनको खोजो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि हम तैयार कैसे करेंगे जो लोग सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, सुधार करने वाले तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन रियली में हमें उन्हें तैयार करना होगा। जो सुधार नहीं चाहते उनको हम कैसे तैयार करेंगे? तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सर। ओके, सो हाँ ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पे तैयार करना था ना, उसको थोड़ा नहीं देखे थे। आप एक काम करो प्रिंस, कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप में भी देख रहे हैं ना, थोड़ा वो एक्चुअली सर बोथ ऑप्शंस आर सिमिलर, सीम सिमिलर, तो इसलिए वो पहला वाला कंफ्यूजिंग है। ठीक है। नहीं इसमें मतलब सारा प्रिंस एक मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता कि डायरेक्ट बन जाएगा। प्रिंस, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ यस सर। अभी आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पूरा पढ़ो, 4 ऑप्शंस भी पढ़ो और फिर एक्सप्लेन करो। ठीक है सर। गद्यांश के अनुसार सामाजिक सुधार की मूल समस्या है ऑप्शन 1 उन लोगों की तलाश जो सुधारक है, ऑप्शन 2 उन लोगों की पहचान जो असामाजिक है, ऑप्शन 3 सुधार हेतु लोगों को तैयार करना, ऑप्शन 4 समाज सुधारक लोगों का अधिक होना। इन सर पूरा को हम बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग in the passage that we have to find out those people who are main responsible for social reform, and option 1 is saying we have to find out those people who are reformer, option 2 is saying to find those people who are असामाजिक नॉन असामाजिक तत्व होता है ना, उसका एग्जैक्ट इंग्लिश क्या होगा? अनसोशल। हाँ अनसोशल, हाँ अनसोशल, हाँ वही। तो टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर अनसोशल, ऑप्शन 3 टू प्रिपेयर दोज पीपल हु कैन लोगों को तैयार करना। स्क्रीन ऑफ हो गया था। सुधार है तो लोगों को तैयार करना, मतलब कि उसको रेडी करना है टू। और ऑप्शन 4 है समाज सुधारक लोगों का अधिक होना, मतलब कि यहाँ पे ये इलॉजिकल है, ये एकदम मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे बोल रहा है कि दे आर मोर पीपल हु आर सोशल रिफॉर्मर, ऐसा कुछ बात नहीं बोल रहा है पैसेज में। Paragraph, whatever is discussed in this paragraph is how to find a solution to this problem. The solution is सुधार होते लोगों को तैयार करना. We have to prepare those people who are ready to solve the problems in the society. So that is the reason why Yes, option 3 is the right answer option. सही है ना? Option 1 was saying only to find out those people, but option 3 is saying to जो आप अभी बोले ना सर, वही बोल रहे हैं। To make them ready. To make ready people to do the reform. To make the people ready. Okay. So how many of you scored 1 mark for this question? Please say send thumbs up. 1 mark. We don't have Pepsi and Cola here, so we have to send only thumbs up only here. Right, so this is also, I think it's not easy. I believe that this is easy, not easy. This is little difficult and little tricky. So we need to be very very careful. Okay, so third question, ज्योति मैम आप एक बार पढ़ के इसको थोड़ा explain करके और what is the answer आप थोड़ा explain कीजिए, and if it is possible please explain in English. Sure sir, sure. प्रिंस आप म्यूट कर लो प्लीज। गद्यांश में लोकमत स्थापित करने के लिए
क्या करने के लिए कहा गया है. It means what is paragraph is saying to establish to establish the republic opinion, to establish the republic. So first is परिवर्तन के लिए तत्परता, means people to be ready for change. Yes. And परिवर्तन के लिए धैर्य, patience for change. समाज सुधार की तत्परता, सोशल रिफॉर्म, रेडीनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म. समाज सुधार की प्रबलता एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल रिफॉर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल रिफॉर्म. ओके. तो गद्यांश में लोकमत स्थापित करने के लिए क्या करने के लिए कहा गया है. तो इसमें कहा गया है कि परिवर्तन के, समाज सुधार की तत्परता, अकॉर्डिंग टू मी, कि समाज सुधार की तत्परता होनी चाहिए लोगों में, कि हम परिवर्तन के लिए तत्परता, परिवर्तन के लिए धैर्य, समाज सुधार की प्रबलता, प्रबल लोकमत. तो समाज सुधार की प्रबलता मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडीनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म. ठीक है. सही आंसर इसमें क्या हो सकता है ज्योति मैम? सर मेरे हिसाब से तो सोशल रिफॉर्म की रेडीनेस, प्रोबेबिलिटी, प्रबलता. ठीक है. लेकिन आप लोग एक बार इसको फिर कंफ्यूजन हो जाता से पढ़िए. आप, आई विल शो यू द पैराग्राफ्स आल्सो. एक बार लोकमत स्थापित करने के लिए सर ऑप्शन 2 ही हो सकता है. एक मिनट प्रिंस, सब लोग एक बार फिर से पढ़िए इसको और समझिए. एक क्लू वर्ड है उसमें, इसमें बहुत कुछ होगा, इसलिए करके कुछ वर्ड है. उस वर्ड का अगर आपने पकड़, सर सॉरी, यस, पेशेंस, यस सर. हाँ, पैराग्राफ देख करके आप समझ में आया, पेशेंस. यस. तो ये सेकंड नंबर. बहुत देर लगेगा उसको परिवर्तन लाने के लिए. टू ब्रिंग द सोशल रिफॉर्मेशन इन द सोसाइटी इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लंबा वक्त बोला है ना. सो परिवर्तन के लिए पढ़िए मैडम. देरी हो, परिवर्तन के लिए धैर्य, पेशेंस होना चाहिए. पेशेंस फॉर चेंज. ओके, गुड. So second option, because we have to go with the paragraph, not for our opinion. Yes. You very first you told this, sir. We have to think inside the box. We should not think outside the box for these unseen passages. Yes, sir. Second one is the correct. Okay. How many of you scored mark? 1 mark here, please send thumbs up. Okay, स्नेहलता नॉट. सर मैंने तो गलत बता दिया, लेकिन पैराग्राफ मेरे पास होता सामने तो मैं सही कर देती. होता है मैडम, क्योंकि लास्ट टाइम प्रिंस भी वही हुआ ना, क्योंकि पैराग्राफ दूसरा है, क्वेश्चन इस तरफ दिखेगा तो कंफ्यूज होता है. वो नॉर्मल है मैडम, उसके लिए आप डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज क्वाइट कॉमन हियर. ठीक है. सो आउट ऑफ 3 what I feel is first question is easy to score, very easy to score first question. Second question is little confusing. Third question, if you know the word meanings, if you can know what is the meaning of dhairya, tatpar, all this, if you words know the meaning, you can find answer. So I feel third question answer is also not so easy to score, but 1 mark is easy to score. Next, fourth question, let me try with others who are not well versed in Hindi language. Fozia ma'am. Please unmute your microphone. Ma'am, you are not audible. Fozia ma'am. Fozia, can you speak? Good evening, sir. Good evening. Please read the fourth question. गद्यांश के अनुसार कल्याणकारी लोकमत की विशेषता है परोपकार की भावना, अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाना, अपनी समस्याओं से पलायन, प्रबल प्रवृत्ति वाला होना. ठीक है. Now again I'll go back to the reading unseen passage. You read the question silently, go to the unseen passage, read it again and then come back. Check the question first.
गद्यांश के अनुसार कार्यालंकारी लोकमत की विशेषता है. Okay, so let us go back. Ranjita, wait madam, one nimsha wait madi. We'll go back to the passage. And we'll see the passage now. Look at the keywords. Any keywords you can find? Vijay Kumar sir and others, everybody find out, because question is on one screen and passage is on another screen. That may lead confusion, I can understand, but still let us try. Okay, otherwise I'll just make it very like this. Maybe it is not visible, correct? Is it visible for you? Yes, sir. It's okay. We can zoom it out. You can zoom it out from your side, and you have to read the passage once and then come to the fourth question. गद्यांश के अनुसार, fourth question, according to the passage, what is the speciality, visheshta? Question number 4. Okay, now see, come to this is the passage, zoomed it, you can go through it once. Shall we go to the question? Shall I go? Okay, so the question here again, ma'am. Fozia ma'am, please read. Fozia? Sir, fourth one again. Sir, is this the fourth one? Yes, fourth one. गद्यांश के अनुसार कल्याणकारी लोकमत की विशेषता है. फर्स्ट ऑप्शन परोपकार की भावना. सेकंड ऑप्शन अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाना. थर्ड ऑप्शन अपनी समस्याओं से पलायन. फोर्थ ऑप्शन प्रबल प्रवृत्ति वाला होना. Shari, correct. Okay, right. Now what is the answer? Now you can guess, at least use this technique. No, if the answer sentence is lengthy, then it may be the right answer here also. What is the answer now? Tell me, everybody. Fourth question. Snehalata. Sir, ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. Can you explain in Hindi what is the right answer? What should be the right answer? For which one, sir? Fourth one? Maybe second, sir, as it is long, lengthy. So the simple technique is, if any one of the answer options is too lengthy, that must be the right answer. But here also the answer explanation is clear. अपनी समस्याओं को क्या बोलते हैं इसको? What is the pronunciation? अपनी समस्याओं को स्वयं अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाना है. So whoever solves their own problems by themselves, they are the one actually the speciality of those people. If we can't solve our own problems, how can we solve others' problems? Okay, now turn to Prince. Prince, please explain. गद्यांश के अनुसार कल्याणकारी लोकमत की विशेषता है. तो जो Prince, you are not audible. Yes, sir, I am audible. From the passage, according to this passage, what is feature of welfare, republic welfare? Speciality of people who does this welfare. First is परोपकार की भावना. परोपकार means welfare of others. Those who do welfare for others. Second is those who find their solution on their own. Option 3, to escape from problem. And fourth one is pravritti means nature. नेचर. प्रवृत्त वाला होना. Good
में क्या बोलेंगे? determined to be So what is the right answer? The right answer is option 2. How many of you got answer 2? लंबा सेंटेंस है तो वही आंसर है. मिल जाएगा मार्क सबको एक एक. So this one mark. Okay, right. Next, fifth question. ज्योति मैम, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिफ्थ क्वेश्चन को. प्रतीक्षा का समानार्थी शब्द, सिनोनिम ऑफ पेशेंस. सिनोनिम, ओके. सिनोनिम ऑफ पेशेंस. पेशेंस, परीक्षण, अन्वेषण, सर, नॉट विजिबल, इंतजार, चैन. तो पेशेंस, इंतजार. Patience synonym is intajar. So means wait. Yeah. Okay. So how many of you got mark over here? From this question you got mark? Okay. This is not very difficult question. It is easy question. So out of this 5 questions, I feel question number 1. Sorry, 1 second. I'll change this one. Out of these 5 questions, I feel question number 1 is easy, and the question number 5th one is easy. Remaining a little tricky. If you are little smart, you can easily find answer to 4th question. So our chances are, maximum chances are 2 marks. So how many of you scored more than 2 marks from these 5? Raise your hand. How many of you scored more than 2 marks? Ranjita, Devkumar, Mahesh sir. Okay. So and Snehalata. So minimum 2 marks we can score from out of 5. So you need to be very careful in English part. You should not lose marks in English. Yesterday also we had this same strategy. Out of 10, 6 marks if you score, 2 marks at least we have to score from Hindi part. Prince, bolo Prince. सर एक दो छूट ही जाता है, मतलब गलत हो ही जाता है. गलत नहीं करना है. अगर गलत लग रहा है तो उसको टच मत करो, नेगेटिव मार्किंग है ना इसमें. हाँ, नहीं करेंगे. नहीं, ऐसा आता ही है सर पैसेज में, मतलब कि कभी किसी का मतलब कि समानार्थी शब्द नहीं पता चलेगा, मतलब अलग अलग एंटोनिम सिनोनिम जैसे इंग्लिश में होता है उसी तरह से रहता है इसमें भी, जो सुना हुआ नहीं रहता है जल्दी. लेकिन इतना बाकी नहीं देगा प्रिंस. इतना 8 नंबर तक एकदम श्योर आ जाता है. 8 नंबर आ जाएगा सबको आ जाएगा. सर 8 मार्क्स तो हमें दोनों में मिला के लेना है ना. हाँ, दोनों में मिला के 8 मार्क ठीक है सर, बढ़िया है. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आपको आंसर सेलेक्ट नहीं करना है इसमें. सर हमको 12 नंबर लाना है, 30 नंबर है. लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज भी है ना. हाँ, 10 नंबर हिंदी लिए हैं, 20 नंबर इंग्लिश. तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. हीना, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారేమ్మా? Yes sir, good evening sir. Good evening amma, చెప్పండి. Sir, I was applying for KVS and the person asked me, they gave an option, language competency test, which subject should I take? And as you know, I'm very poor at Telugu. I'm very poor in Telugu. So shall I opt for Hindi, or should we have to write Hindi and Telugu both compulsorily? Okay, so you did not understand yesterday's class, ma'am? Yeah, sir. I posted message. I think you know. It's okay, fine, no problem. I'll reserve your question. I'll keep your question in my mind, but we'll discuss after completion of these questions. Okay, 5 questions are there. We'll discuss. Then we'll complete these 5 questions. Then I'll get back to you, Hina ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Let us solve remaining questions. मतलब क्या बोलते हैं, कुल मिलाकर यही बात है, अगर जब तक आपको आंसर सही नहीं लग रहा है तब तक आपको इसको टच नहीं करना है, हिंदी पार्ट को, और इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको कोशिश करना है. दैट इज द मेन स्ट्रैटेजी. ओके, लेट अस गो टू द 6th क्वेश्चन. ज्योति मैम, प्लीज रीड द 6th क्वेश्चन. ओके सर. विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? विलोम शब्द क्या है, एक बार एक्सप्लेन कीजिए. अपोजिट वर्ड. ओके, अपोजिट. सो सिनोनिम को क्या बोलते हैं हिंदी में? समानार्थी. पर्यायवाची भी बोलते सर. पर्यायवाची अगर लिखेगा तो भी सिनोनिम, और समानार्थी लिखेगा तो भी सिनोनिम. ओके, पर्यायवाची और समानार्थी मतलब सिनोनिम, और विलोम शब्द मतलब अपोजिट. हाँ सर. प्लीज मैडम पढ़िए. इह लोक
Ihlok, Parlok. Okay. He means this world, Okay. and Parlok means the heaven, the world out of this world. Dukh, Sukh, Nishkam, Sakam, Nirakshar, Sikshit. Dukh, Sukh, Dukh means worries, problems, and Sukh means happiness. Nishkam and Sakam. Nishkam means don't think about your karma's phal, means fruit. So that is called Nishkam, and Sakam means whatever you are doing, you are expecting for the fruit. Okay. So Nishkam, just opposite Sakam is right. Nirakshar and Sikshit. So Nirakshar का होगा साक्षर. Fourth one is the wrong option. Okay. लेकिन सबको ये समझना है कि क्वेश्चन समझ में आना है ना। पहले विलोम शब्द का कौन सा ये क्या है मैडम? युग्म. युग्म means सही, means what is the wrong option, means pair. पेयर नहीं है ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। यस सर. तो ये अगर नहीं को वो छोड़ दिया है तो उन लोगों को कभी भी नहीं आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में सही मैचिंग हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में भी सही मैचिंग, ऑपोजिट सही हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी ऑपोजिट सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में ऑपोजिट सही नहीं है और नेगेटिव क्वेश्चन, इसलिए ये आंसर हमको सही है। राइट, ओके, सो यस सर. हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 1 mark ओवर हियर? हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 1 mark? राइट, मैक्सिमम लोग, आप लोग इसको क्वेश्चन को आपने समझ लिया और नेगेटिव क्वेश्चन को आंसर भी आपको आ गया। ज्योति मैम, प्लीज रीड द 7th क्वेश्चन। सर, उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट सिनोनिम, पर्यायवाची मींस सिनोनिम। ओके, सिनोनिम्स, यस सर. उत्कृष्ट मींस बेस्ट. ओके. उन्नति, उन्नति मींस योर प्रोग्रेस. ओके. श्रेष्ठ मींस बेस्ट. उत्थान, उत्थान means already progress. Or Umesh, I don't know Umesh means. Umesh is the name for I think it's a god and something. Okay. So sir, second option, Shresht, best. Utkrisht means be best, and Shresht means be best. Shresht. Okay. So the answer is 7th question. Answer is 2. How many of you scored 1 mark over here? Please raise your hands. Thumbs up. 1 mark. Okay. Jyoti ma'am, Snehalata. Okay, maximum everybody has scored. So compared to yesterday's performance, today your performance increased a bit. Let us see, 3 more questions are there. Let us see how many marks you can score finally. 8th question, ma'am. Jyoti ma'am, please padiye. Sir, this is Tatsam Tadbhav. Tatsam Tadbhav means the Sanskrit word and the local word. Okay. The Sanskrit means we can say that which we are using in the local our life. Sir, Prakriti Vikruti. Yes, yes. Okay. का कौन सा युग्म, which pair is not right? असंगत means not right. Okay, it's a negative question. Yes, sir. Okay. Patrika, Pati. Patrika means letter, and Pati means also letter. So same, it's okay. Patrika is the Sanskrit word, and Pati is the local word. Nritya, Nach. Nritya Sanskrit word, Nach local. Okay. Dhrum, Dhrum, Dhua. Dhrum means be smoke, and Dhua means be smoke. Pakshi, Chidiya. Pakshi और चिड़िया, तो सर चिड़िया दोनों तो एक ही है सर, यहाँ तो सारे एक जैसे हैं सर. ये ऑप्शन 1 होना चाहिए. पाती लेटर को नहीं बोलते. क्वेश्चन नंबर, अच्छा, मैगजीन, ये सॉरी सर, मैगजीन, पत्रिका, पाती, हाँ, मैगजीन एंड लेटर 1 होगा. यस सर, यस सर, 1. लेकिन मुझे ये बोलने में तकलीफ हो रहा है कि मैं जो आंसर की दिया है ना, उसमें दिया है ऑप्शन 4 नहीं करके, आंसर करके 4 था. पक्षी, चिड़िया, हाँ वो दिया है उसमें. लेकिन सर पक्षी को भी हम लोग चिड़िया ही बोलते हैं ना. लेकिन वो संस्कृत में पक्षी और चिड़िया तो लोकल लैंग्वेज का सही है सर. हाँ तो सही है, ये ऑप्शन गलत है सर. फिर तो क्यों उसने आंसर रेस्पॉन्स शीट में तो 4 ही दिया था. సార్ జనరల్ గా తెలుగులో పక్షి పక్కి అని ఉంటుంది సార్ ప్రకృతి వికృతిలో. చిడియా అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ వర్డ్ సార్. ఓకే. Compared to 3 members in elimination process, we can go for slightly it is there, no, so we can go for 4 sir. 4th one, let us see. प्रिंस आप एक्सप्लेन करो क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट में तो ऑप्शन 4 दिया है
लेकिन आप लोग क्योंकि आप लोग तो लोकल लैंग्वेज है ना आपका, तो प्रिंस सर पक्षी वैसे संस्कृत ही है, चिड़िया संस्कृत नहीं है। हमें संस्कृत वर्ड और लोकल वर्ड का पेयर नहीं मिलना चाहिए ना, तो यही सही होगा। सही कह रहे हैं। पक्षी का पंछी भी होता है। तो सही है सर, ये ऑप्शन सही है। पक्षी संस्कृत में बोलते हैं। हाँ ये सर। पक्षी का पंछी भी हो सकता है, इसीलिए शायद नहीं दिया होगा। तो आंसर पंछी भी तो होता है। 4 है। हाँ प्रिंस, ये सही कह रहे हैं आप, पक्षी का पंछी हो सकता है। हाँ। तो इसीलिए ऐसा how many of you scored 1 mark here? How many of you scored 1 mark over here? Raise your hands. దేవ్ కుమార్ లేదు, కొంచెం కష్టంగా ఉంది. ఎస్ ఎస్ చంద్రశేఖర్, ఇంగ్లీషు, తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్, మలయాళం అన్ని. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే చంద్రశేఖర్, మనకు ప్రకృతి వికృతి ఉంటుంది కదా, మనకు తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికి సంస్కృత పదాలు ఉంటాయి, దానికి మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి తెలుగు పదాలు ఉంటాయి కదా, అలాంటి వికృతి అనమాట. మనం ఇందులో వచ్చేటప్పటికి పక్షి, చిడియా అనేటప్పటికి రెండూ కూడా వికృతి అనమాట, సంస్కృత పదాలు కాదవి. కనుక అట్లా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. ఏ దానికైతే ప్రకృతి వికృతి మ్యాచ్ కావటం లేదు అనే క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ 3 ఆప్షన్స్ లోనే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, 4th ఆప్షన్ లో మ్యాచ్ కావటం లేదు. ఓకే సార్, థాంక్యూ సార్. రైట్. 9th क्वेश्चन मैम, ज्योति मैम. ओके सर। संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है? असंगत मीन्स रॉन्ग है ना? रॉन्ग सर। हाँ ठीक है मैम. सर the letters joining words you can say sir, sandhi means yeah. So which one is the right for the pair of letters makes word? So suagat, su का स्वागत is right. इति धन आदि इत्यादि, it's right. महाधन ऋषि, महर्षि. रमा धन ईश, रमीश. तो रमेश, it should be Ramesh sir, because a or e makes a. So it should be Ramesh, not Ramesh. So this one is the wrong one. Okay, right. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో తెలుగులో వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి మనకు సందులు సమాసాలు ఉంటాయి కదా, అంటే మనకు రామ ప్లస్ అది ఉందనుకోండి, నీతి, రామనీతి, అట్లా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి చూడండి తెలుగులో. ఆ విడగొట్టినప్పుడు సరిగ్గా కలుస్తున్నాయా లేదా అంటూ చూసుకుంటే మొదట్లో 3 పదాలు సరిగ్గా కలిసినాయి, కానీ చివరి లాస్ట్ పదం వచ్చేటప్పటికి రమా ప్లస్ ఈష్ వచ్చినప్పటికి రమేష్ అని వచ్చింది చూడండి, రమేష్ కాకుండా. కనుక 4th ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. అసంగత్ అంటే ఏంది, రాంగ్ పైరింగ్ అనమాట. కనుక దీంట్లో మనం చూసుకోవాలి. ರಂಜಿತಾ ಅವರೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಇದು ಗ್ರಾಮರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದಮ್ಮ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 1 mark over here? Okay, everybody is thumbs up only, right? No Coca-Cola. Okay, right, fine. Last question, let us see. Jyoti ma'am, please. समूह से भिन्न शब्द युग्म, समूह से में odd one out. Yes sir. Okay. So and these all options are opposite words. Okay. दिन रात, day night. आगे पीछे, forward backward. Okay. ऊंच नीच, up and down. कंकड़ and धूल. This one is the wrong one. कंकड़ and धूल. Okay. Means dust and particles. Okay. Can you read the question, ma'am? समूह से भिन्न शब्द युग्म है. भिन्न means a wrong word, असंगत. Or odd one. Yeah, odd one. Yes sir. Okay. कंकड़ और धूल. Yeah. Particles and dust. Okay. So this is not matching. So that's why this is the right answer for this question. So how many of you scored 1 mark here? Okay, maximum you have scored. Now let me see how many marks actually you scored. For example, if I write this part, how many marks I would have scored, let me tell you. First question I would definitely score 1 mark. Second question I am not sure. Third question I am not sure. Fourth question I am sure, very sure. Fourth question, and then fifth question also I am sure 3 marks. Sixth question also I am sure 7 marks.
I mean 5 marks. 7th question also I am sure, and then 8th question I am not very much sure, and 9th question I am sure. Okay, and 10th question not very sure. So minimum 5 marks I could have scored if I had written this paper in examination. Now tell me, how many of you scored 5 and above marks? Please raise your hand. Thumbs up, thumbs up. 5 and above. 5 and above, good. Maximum. Okay, now those who have scored less than 5 marks, please unmute and explain where did you lose your marks, and why we know, because we don't know Hindi, but at least where did you lose your marks? Whoever scored less than 5 marks, please unmute your microphone. Sir, I got 2 marks. Sir, I got 2 marks, sir. 2 marks. Yes, sir. Okay, so you need to practice more, and you need to watch these Hindi videos. I'll share the set of Hindi videos after this class, maybe tomorrow onwards, but you need to practice more, Chandrasekhar, because you are almost, I can say, or already you have cleared the tier 1 examination. Unless until you commit a blunder, nobody can stop you clearing tier 1 examination, not only in KMRS, even in KVS and NVS also. So you should not commit a blunder. అంటే తప్పు చేయకూడదు. మీరు తెలుగులో అచ్చమైన తెలుగు చెప్పాలంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్లు రాసి వచ్చినా కూడా మీకు టైర్ 1 క్లియర్ అవుతుంది, కానీ ఎక్కడా కూడా తెలిసి తప్పు చేయకూడదు అనమాట. కనుక హిందీ పార్ట్లో మీరు మ్యాక్సిమం టచ్ చేయకుండానే ఆ 10 మార్క్స్లో 8 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే సార్. అలా కాని పరిస్థితుల్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చూసుకొని, ఆ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చూసుకుంటే ఎలా చేయాలంటే, ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్ని కనీసం అంటే ఒక 10-15 రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఆ ప్రాక్టీస్ వల్ల మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, దాంతో మీరు కొంచెం ఐడెంటిఫై చేయగలరు అన్నమాట క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. అది ఇంకా ఆ టెక్నిక్ అది. తర్వాత మనకు ఇది ఇంకా ఆపోజిట్ విలోమ్ అనేది, తర్వాత వచ్చేటప్పటికి దాన్ని ఏమంటారు, సినోనిమ్స్ ఎట్లా వస్తాయి మనకు, సమానార్థని, ఇట్లాంటి పదాలు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఎగ్జామ్లో రైట్ వర్డ్, రాంగ్ వర్డ్, సినోనిమ్, యాంటోనిమ్ గుర్తుందనుకోండి, గుడ్డిగా పెట్టేసి వచ్చినా కూడా ఆన్సర్లు కరెక్ట్ అయిపోతాయి. సార్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్యాయవాచ్య శబ్ద సార్? ఎక్కడుంది అది? పర్యాయవాచ్య సినోనిమ్. Synonym, sir. Just wait, sir. Synonym. Vilom అంటే opposite. Vilom, sir. Vilom అంటే opposite. Sir, సమానార్థన synonym. Same meaning, sir. Same meaning. సమానార్థ, పర్యాయవాచి రెండు కూడా synonyms. విలోమ్ వచ్చేటప్పటికి opposite. सर वाक्यांश को लिखे एक शब्द, व्हाट इज द एक शब्द एंड अनेक शब्द वाक्यों को, दैट मींस सर जस्ट आई नोटेड डाउन सर, नोट डाउन सर. वाक्यों को एक शब्द, दैट मींस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर. नेक्स्ट वेट सर, जस्ट सर. ओके. रंजिता ಅವರೇ ತಾವೇನೇ मुहावरे और लोकों मुहावरे सर, मुहावरे. मुहावरे. What is the meaning, sir? मुहावरे और लोकोक्तिया. लोकोक्तिया proverbs. Yes, sayings and proverbs, sir. Sayings and proverbs. Sayings and proverbs. మీరు ఎలాగైనా చేసి హిందీలో కొన్ని పదాలు రాసుకొని వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ పదాలు కనిపించినాయంటే దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు విలోమ్ శబ్దం అంటే ఆపోజిట్ అని, తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు మనకు సినోనిమ్ వచ్చేటప్పటికి పర్యాయవాచి అని, ఇట్లాంటి పదాలు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, అది కనిపించగానే ఓకే ఇది సినోనిము, ఇది యాంటోనిము అంటూ మనకు గుర్తుకొచ్చేస్తుంది అనమాట. సార్ సమాస్ మీన్స్ కాంపౌండ్ వర్డ్ సార్. సమాస్ సార్ ఇడియమ్స్ ఇస్ ఎ కాంపౌండ్ వర్డ్. ఇడియమ్ సార్ కింద పంపిస్తున్నారు ఇడియమ్స్. సమాస్ సమాసాలు మన తెలుగులో ఉన్నటువంటి సందులు సమాసాలు, ప్రథమా విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి, మీరు విడగొడితే పడగొడితే ఏదో ఉంటుంది చూడండి. తెలుగులో చిన్నప్పుడు ఒకటో క్లాస్ నేర్పించింటారే మనకు, గుర్తురావటం లేదు, చిన్నప్పుడు బాగా నేర్పించినారు. అత్త, కుత్త, నత్త అంటూ మళ్ళీ రెండింటిని కలిపితే అవి విడికొడతాం చూడండి, సరిగ్గా విడిపోవు చూడండి. మహా ప్లస్ రాజు, మహారాజు, లోకం ప్లస్ ఇక్తి, లోకోక్తి, ఇట్లాంటి పదాలు ఉంటాయి కదా, అవి సందులు సమాసాలు. That means combined sentence word. Word. Yes, I noted samas means compound sentence. So are more joined words. I don't know. Okay, sir. Thank you, sir.
ರಂಜಿತಾ ಅವರೇ ತಾವೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಮ್ಮ? ಸರ್ ಮುಹಾವ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಯೂಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಿಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Right. So finally, those who are from other parts of India, different parts of India, those who are from Tamil Nadu, those who are from North India, those who are from South India, Northeast India, Southeast India, all together, what is our aim is, we need to score only 8 marks from these two topics, General English and General Hindi. Out of these 20 questions, we need to find out right answers for 8. That is the only one, what do you call, target for us. Need not to score 10 out of 10. Okay, so be very smart in this place, in this part, and you need to score minimum marks. So if I want to tell you the another strategy for these two areas, if for Prince and Ranjit also, for those who are appearing for TGT English or TGT Tier 1 examination, so for you, you need to be very clear that this part is only qualifying part. So don't waste too much energy here. You need to pick the right words, right sentences, right answers, and clear those parts, and then move to the remaining part of the examination, because the remaining 100 marks are the actually going to be evaluated. Those are the marks which are taken for the criteria for the selection. So don't unnecessarily waste too much time, but this is also important. Unless you score minimum qualifying marks in these parts, you cannot move to the another part, because your question paper answer sheet will not be evaluated unless you score 8 marks. So give importance, but how much importance you have to give, like that must be qualifying nature only. So don't stress too much about these two parts. And I believe that as we are all postgraduates in English and graduates in English, masters in English, it's not very difficult to score 6 to 7 marks or 8 marks also in the general English part. Okay, so be very clear. And this time, like not only this time, even for last time also, if I could remember, they are asking combined marks, not separate English, not separate Hindi. If I could remember, like when I wrote, it was like 5 marks minimum in English, 5 marks minimum in Hindi. Now it is not like that. So you're all lucky people, and you are going to clear the tier 1 examination, and we'll start the tier 2 preparation also. So give equal importance, enough importance, but don't spend too much time in this area. Okay, so those who are from Tamil Nadu, those who are from Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana, and even from what do you call, Odisha and Bengal, give some focus on this part, because this is also important. Okay, so this is about General English and General Hindi part. General Hindi, I took only 2 classes. I dared to take the 2 classes, because though I can't explain things very clearly, but still I tried my best to solve these answers in a practical approach towards examination. Maybe I may not explain these things like Jyoti ma'am or Prince Kumar, but I understood what is this concept. If you understand the concept of these questions, finding answers is not a difficult task. Okay, so this is the 2 classes I took. Tomorrow I am planning to take a class not on Hindi, for the tier 2 preparation, on how to finalize the tier 1 preparation and how to go for the tier 2 preparation, and in between these two, how to adjust the KVS and NVS preparation. So all these things I have planned, and tomorrow we'll have a discussion how to prepare for tier 1 without causing disturbance to the KVS and NVS preparation, and along with the KVS and NVS preparation, how we have to focus even on tier 2 English also. So all these 3 combinations I am working out, so that the new teachers for NVS, they will not have any problem. Their classes will be conducted smoothly, as well as those who are have been attending these classes for the last 1 month, they also should get enough time for revision, and as well as they should not lose time for KVS preparation. So all these things are going in my mind, and I have a strategy. So tomorrow we'll discuss, and tomorrow we'll close the tier 1 what do you call classes, and then we'll go for the revision classes. What to do in revision, how to do revision, all those things we will discuss tomorrow. Just I'll take 2-3 minutes for Hina madam, and then we'll close this session. Hina ma'am, can you repeat your question? I'll stop the recording here, and then we'll discuss for a few minutes, and then we'll end this class. Hina ma'am?
అన్మ్యూట్ చేసుకొని Yes, చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం. Yes, sir. Sir, today I was applying for